स्टार्ट। पैरों को सीधा करके बैठ जाइए। एक पैर को उठा के दूसरे पैर की थाई के ऊपर रखिए। हाथों के फिंगर से पैरों के फिंगर को क्रॉस करिए और हाथ अपना नी के ऊपर रखिए। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट। पंजे को हम अप एंड डाउन करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। 5 to 10 टाइम्स रोटेट करिए। सारी प्रोसेस को हमें 5 से 10 बार करना है। एंटी क्लॉकवाइज। एक हाथ से पंजे को होल्ड करके रखेंगे, दूसरे हाथ से नी को अप एंड डाउन करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नी को रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। एक हाथ से पंजे को पकड़ेंगे, एक हाथ से नी को पकड़ेंगे। राइट एंड लेफ्ट साइड मूव करेंगे। सेम चीज हम दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। एक हाथ से पंजे को होल्ड करके, फिंगर्स को क्रॉस करके, पैरों के फिंगर को होल्ड करके, दूसरे हाथ से नी को होल्ड करके रखेंगे। पंजे को अप एंड डाउन करेंगे। सेम चीज जो हमने पहले पैर से रिपीट की थी, सेम हमें इसमें रिपीट करना है। पंजे को रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। पंजे को होल्ड करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। रोटेट करेंगे। एंटी क्लॉकवाइज। होल्ड करेंगे पंजे को एंड नी को राइट साइड और लेफ्ट साइड होल्ड करेंगे। अभी सिर्फ फिंगर्स के अंगूठे और उंगलियों को मूव करेंगे। पीछे होल्ड कर लीजिए आराम से। बैक स्ट्रेट एंड नेक स्ट्रेट से फिंगर्स एंड टोज को मूव करेंगे। अब पंजों को नीचे की तरफ खींचेंगे। 5 सेकंड होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। ऊपर की तरफ खींचेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। दोनों हाथों को नीज पे भी रख सकते हैं, नीचे की तरफ एंड देन ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अभी एक पैर को सीधा रखेंगे, एक पैर को मोड़ लेंगे, बैक स्ट्रेट रखेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस करके हम पैर को होल्ड कर लेंगे पंजे से। अब ब्रीदिंग करते हुए हमें नी को स्ट्रेट करना है एंड ब्रीथ आउट करते हुए वापस ऊपर आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेम चीज हम दूसरे पैर से रिपीट करेंगे। बैक स्ट्रेट, नेक स्ट्रेट एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर सीधे। टेक अ डीप ब्रेथ। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप। राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे एंड लेफ्ट हैंड से राइट लेग को टच करेंगे। क्रॉस में जो हाथ पीछे की तरफ जाएगा उसके मिडिल फिंगर के टिप को देखने का ट्राई करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Take a deep breath. सेम पैरों के बीच में गैप रहेगा। दोनों हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों के पंजे को टच करते हुए पीछे लाएंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसों पर फोकस रखेंगे।
अगर आप लेट कर सकते हैं किस तरह से सीधे लेट चुकिए और उठ जाइए। एटलीस्ट 5 to 10 टाइम्स हमें ये करना है। एंड एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से ठीक चलाइए। ये कर लिया है। हम थोड़ी देर नाव चलाएंगे। इस तरह से दोनों पैर को नी टच एंकल टच, ब्रीथ इन करते हुए हाथ ऊपर एंड ब्रीथ आउट करते हुए नीचे, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। इसको हम पूरा लेट करके कर सकते हैं किस तरह से, ब्रीथ इन करते हुए उठेंगे एंड ब्रीथ आउट करते हुए उठेंगे। एंटी क्लॉकवाइज हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे एंड नीचे। अब लेफ्टी करते जाएंगे इस तरह से। दोनों पैरों को फैला लेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ। तो हमने ऑलमोस्ट अपने पैरों की लोअर एब्डोमेन की योग अभ्यास हमने बहुत अच्छे से कर लिया। अब हम आते हैं थोड़ा सा कमर पे, दोनों पैरों को मोड़ लेंगे, सीधा लेट जाएंगे, एंकल को फोल्ड करेंगे। अभी 5 टाइम्स अप एंड डाउन करना है, कमर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सारा वेट हमारा अपर बैक पे आएगा। देखिए किस तरह से, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। होल्ड करेंगे अराउंड 10 सेकेंड। स्लो डाउन, डाउन वैसे। टेक अ डीप ब्रेथ। दोनों पैरों को फिर से पास करेंगे, एक पैर को लेंगे, होल्ड करेंगे, धीरे धीरे कमर को उठाते हुए नोज को नी से टच कराएंगे। अराउंड 10 सेकेंड होल्ड करेंगे। स्लो डाउन, दूसरे पैर से। दोनों पैर को एक साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लो बैक। फ्रंट एंड बैक में मूव करिए इस तरह से। ये देखिए, ट्राई करिए पंचकला करने का। जब धीरे धीरे आराम आराम से राइट साइड एंड लेफ्ट साइड मूव करेंगे। स्माइल ऑन योर फेस, छोटे बच्चे के समान। जब बच्चा गुस्सा हो जाता है तब इस तरह से चिट करते हैं ना कभी बच्चे, इसी तरह से अपने बॉडी को मूव करना है। एक हाथ को स्टमक पे रखेंगे, एक को चेस्ट पे रखेंगे। एक डीप ब्रेथ, पेट को और चेस्ट को फुलाइए। धीरे धीरे सांस लेते हुए चेस्ट अंदर की तरफ, पेट को अंदर की तरफ खींचिए। अराउंड 2 to 5 मिनट्स हमें डीप ब्रीथिंग करना है।
जब आपकी ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाए उसके बाद 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और हमारी आज की क्लास हम खत्म करेंगे। गहरी गहरी सांस लीजिए। दोनों हाथों को रख करेंगे। हाथों से कवर करेंगे।